This is Dr. Meena Sahay, retired professor of physics from Ranchi Women's College and now attached with Ram Lakhan Singh Yadav College. Today we will discuss about statistical mechanics for semester 6 students of physics honors, and we will be dealing with the free electrons in metals and the electron gas. Metals are very good conductors, as you know. The high conductivity of metals is due to the presence of free electrons. These free electrons inside a metallic conductor move freely inside the metal. They continuously collide with the fixed localized atoms and thus they behave like an electron gas. जो free electrons है वो collide करता है जो localized atoms से, and so we can call that as an electron gas. These free electrons in a metal belong to a most characteristic system of fermions because fermions obeys the Pauli's exclusion principle. That is, the electrons have a half integral spin of angular momentum h by 2 pi or h cut. They are Fermi particles and obey Fermi-Dirac statistics. The electrons in metals have their energy quantized. Fermi-Dirac derived an expression for the distribution of energies among electrons in the electron gas in a metal on the basis of these assumptions. वो fermions का है because they have electron spin. Electrons, they have spin, integral particle. So now we come to the energy distribution among electrons in a metal. अब एक electron gas को consider करिए. They have got n free electrons and it is contained in a metallic container जिसका volume क्या है? V है और energy, total energy of the electrons is equal to E. Practically at all temperatures, the lower level of energy bands are filled with electrons. The upper level energy bands are only partially filled with electrons. The distribution of electrons is to be considered only in the upper bands, जिसको हम लोग कहते हैं conduction bands. The zero energy level is taken at the lowest level of conduction band. It is assumed that electrons have free movement within the conductor, provided the energy associated with the electrons is of the order of the upper level energy bands. अब हम लोग आ जाते हैं. सो हम लोग का क्या है? इलेक्ट्रॉन गैस है, n फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वॉल्यूम v है, एनर्जी है E. अब एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड इज कंटिन्यूअस, तो टर्म Gi को हम रिप्लेस कर लेते हैं G function of E dE. Hence n function of E dE, electrons have energy in the range E and E plus dE. अब Fermi-Dirac distribution function हम लोग कर चुके हैं. So according to Fermi-Dirac distribution law, Ni number of particles is Gi divided by e to the power of alpha e to the power of Ei by kt plus 1. अब Gi के बदले में हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं GeDE और Ni के बदले में हम लोग करते हैं n which is a function of ED. तो ये इक्वेशन बन जाता है n function of EDE GeDE divided by e to the power of alpha e to the power of E by kt plus 1, and let this be my equation number 1. अब इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है? इट कैन बी प्लस हाफ और माइनस हाफ, माने प्लस माइनस हाफ. तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन द स्फीयर क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि आधे का प्लस होगा हाफ और दूसरे का माइनस हाफ. सो वॉल्यूम मेरा क्या है? v by 2 pi cubed, v divided by 2 pi cubed is traditional states per unit volume in Fermi space. A Fermi spheres of radius कितना है? kF has the total number of particles accommodated. कितना है? Ne 2, क्योंकि वो प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, v by 2 pi cubed 4 by 3 pi
kf cubed. This is divided by e to the power of alpha into e to the power of e by kt plus 1, and this is my equation number 2. अब यहाँ पे जो E है ये क्या है, p squared by 2m मोमेंटम है and m is the mass, so h by 2 pi whole squared into kf squared by 2m. Therefore kf, इसको दोनों को इक्वेट जब कर देते हैं तो मेरा क्या आ जाता है, kf वो जो रेडियस था इज इक्वल टू पी बाई एच बाई 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई पी बाई एच, एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3. अब ये इक्वेशन 3 को यहाँ के एफ का वैल्यू इस इक्वेशन 2 में यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तब क्या आता है, एन ई इज इक्वल टू 2 इंटू वी बाई 2 पाई क्यूब 4 by 3 pi into 2 pi by h cubed into 2me by to the power of 3 by 2 divided by e alpha to the power of alpha e to the power of e by kt plus 1. यहाँ पर जो आपका यहाँ p था, बिकॉज p के बदले में हम लोग ने क्या डाला, 2me to the power of half. सो ये टर्म वहाँ से आ जाता है. सो आई गेट एन ई इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तब आ जाता है 8 पाई वी डिवाइडेड बाई 3h टू द पावर ऑफ 3 2 into 2m into 2m to the power of half into e to the power of 3 by 2, and this is divided by e to the power of alpha e to the power of e by kt plus 1, and this is my equation number 4. अब इस इक्वेशन 4 को डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या आ जाएगा, एन ई विथ रिस्पेक्ट टू ई, तो एन ई डी ई 8 पाई वी बाई 3h क्यूब 2m इंटू 2m टू द पावर ऑफ हाफ प्लस यहाँ e है टू द पावर ऑफ 3 बाई 2, तो 3 बाई 2 e टू द पावर ऑफ हाफ डी ई डिवाइडेड बाई e टू द पावर ऑफ अल्फा e टू द पावर ऑफ e बाई के टी प्लस 1, और एन ई डी ई 8 pi v into 2m cubed to the power of half divided by h cubed into e half divided by e alpha into e to the power of e by kt plus 1 into de. अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिए तो मेरा ये आ जाता है, एन ई डी ई इज 8 under root 2 pi v m to the power of 3 by 2 e to the power of half de divided by h cubed e to the power of alpha e to the power of exponential to the power of e by kt plus 1, and this is my equation number 5, and this equation 5 represents the distribution of energy among the free electrons. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक e to the power of alpha, alpha एक constant है. We will discuss this constant after we do about the Fermi energy. Thank you very much.